औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, hope you all will be fine. Today we will learn the question answers of our unit number 4, plants. In this unit I have already explained you about the living and non-living things and about the plants. I will read the questions, and after that we will learn the answers. You will repeat the answers with me so that you can learn the answers, and after that you will repeat every answer at least 10 to 15 times so that you can learn all the answers by heart. And after that we will learn the spellings of difficult words, and same in the difficult words you will also repeat each and every word at least 10 to 15 times so that you can learn the spellings by heart. Our first question is, what are living things? Living things क्या हैं? Answer is, living things can breathe, move, eat and grow. Now you will repeat it with me. Living things can breathe, move, eat and grow. We will repeat this question at least 10 to 15 times so that you can learn it by heart. Living things can breathe. Breathe का मतलब मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सांस लेना, मूव हरकत करना, ईट खाना एंड ग्रो बढ़ना. लिविंग थिंग्स जो खाना खा सकती हैं, बढ़ सकती हैं, सांस ले सकती हैं और हरकत कर सकती हैं, उन्हें लिविंग थिंग्स कहते हैं. नाउ यू विल रिपीट इट विद मी अगेन. लिविंग थिंग्स कैन breathe, move, eat and grow. Now come to our second question. Question number 2. Write the names of some living things. कुछ living things के नेम लिखने हमने. Human beings, plants and animals. I have already told you that we have 3 types of living things: human beings, plants and animals. Repeat it with me. Human beings, plants and animals. Again, human beings, plants and animals. Now come to our next question. Question number 3. Where do plants grow? Plants कहाँ grow up होते हैं, बढ़ते हैं? Plants grow in soil as well as in water. Plants grow in soil. Plants मट्टी में बढ़ते हैं या लगाए जाते हैं, as well as in water, और पानी में भी होते हैं. You will repeat it with me. Plants grow in soil as well as in water. You will repeat these answers at least 10 to 15 times so that you can learn these answers by heart. Now come to the difficult words of these questions. First word is living things. Spell living, Living. Living. Things, Things. Things. Living things. Spell living things again. Living. Living. Things. Things. Living things. Next word is breathe. 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 Repeat it again. Breathe. अब आप इसमें देखें, आपके पास ईट के स्पेलिंग हैं, ही के स्पेलिंग हैं. नेक्स्ट वर्ड इज ब्रीथ. Breathe. Breathe.
Spell breathe again. B-R-E-A-T-H-E. Breathe. Our next word is move. M-O-V-E. Move. Spell move again. M-O-V-E. Move. Hope you all are repeating with me. सब बच्चे साथ साथ रिपीट करें ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से स्पेलिंग्स लर्न हो जाएं, और हर स्पेलिंग को बाद में आपने 10 to 15 टाइम रिवाइज करना है ताकि आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाए. नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्रो. G-R-O-W. ग्रो. स्पेल ग्रो अगेन. G-R-O-W. ग्रो. Our next word is human beings. H-U-M-A-N. Man. Human. B-E-I-N-G-S. Beings. Human beings. Repeat it again. H-U-M-A-N. Man. Human. B-E-I-N-G-S. Beings. Human beings. Next word is plants. P-L-A-N-T-S. Plants. प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम ये स्पेलिंग्स काफ़ी दफ़ा लर्न कर चुके हैं. आई होप इसमें से कुछ स्पेलिंग आप लोगों को अच्छी तरह से आते भी होंगे. Our next word is animals. A-N-I-N-E-M-A-L-S. Mals. Animals. Spell it again. A-N-I-N-E-M-A-L-S. Mals. Animals. Our last word is soil. S-O-I-L. Soil. Repeat it again. S-O-I-L. Soil. आपने सारे क्वेश्चंस को और सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स को एटलीस्ट 10 to 15 टाइम रिपीट करना है ताकि आपको अच्छी तरह से ये लर्न हो जाए. थैंक यू. दैट्स ऑल फॉर टुडे. ओके, अल्लाह हाफिज़.